In this question, we have to verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them, right? So let's see what is given. So we have given here polynomial px is equal to x square, राइट। और हमें यहाँ पर चेक करना है कि x इज इक्वल टू जीरो, क्या पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो है या नहीं है, राइट। तो जब भी हमें जीरो चेक करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द गिवन पॉइंट, राइट। इट मीन सबसे पहले हम पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स मुझे पी जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बाई पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, putting x is equal to 0 in polynomial px, right? So px, it means हम x को 0 से रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स x के प्लेस पर 0, तो 0 का स्क्वायर, एंड 0 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, आंसर हमारा होगा 0। इट मीन्स हमें पॉलिनोमियल px की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें मिली है 0। Therefore, right, so we can say that therefore x is equal to 0 is a zero of the given polynomial, right? Is a zero of the given polynomial px. Okay, so this is the solution of this question.